Hello everyone. We are back with another new personality that we thought will be useful for us. Plus, we just wanted to give him the platform as well to express what has been gone through since last a month or two, and plus how he responded in an area which is like hotspot for the entire world. कोविड का जो एक हॉटस्पॉट रहा है वो न्यूयॉर्क रहा है एक महीने से, और उसमें जो है ये कम्युनिटी ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो हम जानना चाहते थे कि जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उनसे हमें पता चले बेसिकली कि भाई किस तरह से ये लोग गो थ्रू किए हैं, देन लर्निंग्स क्या रही है। और फिर एक जो सबसे बड़ा पार्ट आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड स्पेशली इन इंडिया में बहुत जरूरी है वो ये है कि अवेयरनेस एजुकेशन प्लस गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बहुत सारी एनजीओ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें इमरान भाई से हम पूछ सकते हैं। सो लेट मी वेलकम इमरान पाशा हियर। थैंक यू इमरान भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम। Assalamu alaikum. Hello everybody. Thank you Wasit for inviting me on your show. Let me just tell you about Imran Pasha. So Imran bhai has been part of New York community in Long Island since last 2 decades. तो जब हमारी बात हो रही थी, he explained me one very good point that the reason of being so active, जो वो चाहते थे कि मैं कम्युनिटी में एक्टिव रहूं, बड़े सोशल हैं और अपनी जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीजें करते हैं। सो इमरान पाशा इज फाउंडर ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट लीग ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। लॉन्ग आइलैंड में जितना बड़ा न्यूयॉर्क स्टेट है उसमें सबसे बड़ी क्रिकेट लीग चलाते हैं ये, माशाल्लाह। एंड देन ही इज पार्ट ऑफ few organizations which deals with human rights and social justice. तो वहां पर भी इनका एक अच्छा रोल रहा है अभी तक न्यूयॉर्क में, where it is necessary as well. Plus the main intention behind that to build the community or build a place which in which we can live peacefully. Plus he has been part of a lot of Muslim communities, cultural communities there. So overall जो है बड़े active रहे हैं अभी तक, and the idea behind having a conversation with Imran bhai is to get that feel or that flavor of what exactly is happening there, especially इस कोरोना वायरस में क्या चल रहा है, फिर मुस्लिम्स ने किस तरह से एक अच्छा रिस्पांस किया, किस how was his response to the coronavirus thing. So overall ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं एक बार फेसबुक पे देख लेता हूँ इमरान भाई कि स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। यस, तो ऑल सेट लाइव ऑन फेसबुक। Okay, I think so. इमरान भाई, just let us know about you. आप कहाँ से हैं इंडिया में? मुझे पता है, but I think lot of people would want to know that. और हम ये हिंदी उर्दू में रखेंगे, इंशाल्लाह लोगों को समझ में भी आए। Okay, no problem. ऐसा टाइम रहा और ओवरऑल आपकी एक हल्के से एक एक्टिविटीज जो है वो रही हैं। एंड देन जस्ट टू स्टार्ट विद कि कोरोना में आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक जो हॉटस्पॉट रहा है। Sure. Yeah. So, like you have introduced, I'm part of few organizations, जैसे human right organizations है, cultural organizations है, Hyderabadi Deccan Cultural Association, plus the sports league, cricket league चलाता हूँ मैं न्यूयॉर्क में। तो ये सारी चीजें तो है, and I come from an IT background. Professionally, I'm an IT profession, IT, software engineer. तो weekdays में चलता है and weekends में I just keep myself busy with all these activities, either be it philanthropy work or cultural activities or sports or something or the other. I really want to be in between people. मैं लोगों में रहना चाहता हूँ हमेशा। I enjoy being with people. तो वो है। And I think वो एक हैदराबादियों में एक बड़ा अच्छा खुलूस रहा है। They are always more social. वो एक अच्छा पार्ट रहा है। Right, yeah. So, coming to Corona, as you all know, US में तो ज़्यादातर दुनिया से ज़्यादा जितने भी ज़्यादा केसेस हुए वो अमेरिका में हुए, खास करके न्यूयॉर्क में। If you look at the stats, 3.5 लाख के करीब केसेस हुए न्यूयॉर्क में, out of which 20,000 लोग, just over 21,000 लोग की डेथ हो गई है। So New York was always epicenter. It was really terrible. I feel like everybody slept and I woke up
one fine morning, and world around me has changed. So complete world has changed, and the new terms have become normal: social distancing, quarantine, lockdown, which I never heard of before, which I never used to hearing these words before, which has become very normal, right? And while we are trying to adopt these normals, there are the first responders, like doctors, police department, they're all putting their lives on the front lines to protect us. So I really want to, first of all, I want to thank them from bottom of my heart for doing this tremendous job, protecting us and also trying to control this coronavirus. True. तो इनिशियली आई मीन जब ये शुरू हुआ था न्यूयॉर्क में, people were not that serious about this coronavirus, but I was following what's happening, in China, बाद में इटली में क्या हुआ था, फ्रांस में, I was daily following up क्या चल रहा है, कितने deaths हो रहे हैं. So I realized कि भाई this is really a dangerous thing, even though media and government here in the initial days they said it's not that bad, you just have to wash your hands and that's about it. It's not a serious thing. यहाँ भी रहा है जो ignorance शुरू में कि ये नहीं है वैसा, वो ignorance थोड़ा रहा है. But I think, see, that is the big reason why you see a lot of cases in New York, and New York being the most busiest city in the world. So I think वो ये हुआ ना कि जो 3 million जो यूरोपियंस है, they travel during जो दिसंबर से मार्च का जो टाइम था, तो 3 million यूरोपियंस आए थे. दैट टाइम कोई क्लू नहीं था कि Exactly. तो यूरोप से भी स्प्रेड हो सकता है. दैट टाइम मोर फोकस वाज ऑन अदर कंट्रीज जहां से फैल रहा था. Right. न्यूयॉर्क इज अ हब फॉर टूरिस्ट स्पेशली फ्रॉम यूरोप. Exactly. Yes. Yeah. साउथ एशिया का ज्यादा हब है. तो दैट वाज काइंड मिस फ्रॉम द न्यूयॉर्क साइड. And if you look at, right, people travel from New Jersey, Connecticut, and Boston. People even come from Boston to work in New York every day. So that's the reason you see a lot of cases have come up in New York. And like I said, people didn't know what to do, and nobody was aware that this is also an airborne thing. So इसीलिए cases एकदम से जो है ना फैल गए यहाँ पे. But I did, as I was following this thing in China and also Italy, say, so I try to protect myself, and alhamdulillah, nothing has happened so far. But initial days, it was like really, really scary. When हज़ार में नंबर चल रहे थे, 5,000. Exactly, yes. जब एकदम से जो है ना ये कर्व एकदम ऊपर जाने लगा और हजारों में लोग मरने लगे. And when you see people dying in your community, you're near and dear, it was really scary. मैं बोला नहीं, I'm also not stepping out of my house. That's it. We really got to be careful and all that. डर का माहौल था हर जगह, अफरा-तफरी, people didn't know what's happening. लॉकडाउन हो गया और कितने दिन चलेगा, कैसा रहेगा. And then every minute you actually see कि भाई फलाना इंसान जो है ना अभी पॉजिटिव हो गए हैं, and there is a death message every 1 hour or so. And then if it is like you're close सर्कल में है, तो it actually emotionally मैं एकदम से ड्रेन हो गया था. तो a person like me who's always in people, right, involved in so many activities and all, everything was stopped. घर पे बैठ गया था. But then when I see doctors, police officers and everybody putting their lives and trying to save us, and then I hear all the stories from the families, they can't go out, they're ahead of the houses lying in hospital, or they can't go do groceries, and nobody to console them and all that. Nobody would visit any family or relative, anybody. So it was really difficult for people to cope up with their family person in hospital and all that. So I couldn't take it. I always believed in one thing, Basit, that जमी के ऊपर के लोग को तुम मदद करो, जमी पे लोगों को तुम मदद करो, और ऊपर वाला आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा. So I strongly believe in that, right? So somebody has to step out.
नहीं है। In, और जो मैं वही पूछना चाह रहा था कि एक वक्त पे आप अंदर एक डर भी बोलो आप उसको, और एक प्रिकॉशनरी भी आप अंदर बैठ रहे थे, बट देन ऐसा क्या एक पॉइंट आया जब आपको लगा कि नाउ एक होता है ना कि यार अब मुझे बाहर निकलना है। आई हैव सीन, जो हमारी बात भी हुई थी, यू हैव बॉट सो मेनी प्रोटेक्टिव गियर्स एंड देन यू यूज्ड टू right. डेली वेयर टू लेयर ऑफ क्लोथ्स। तो वो पहला तो ये बताइए कि किस मोमेंट पे आपको लगा कि मुझे बाहर जाके कम्युनिटी में बताना है। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल द व्यूअर्स कि इमरान भाई हैज डन माशाल्लाह एंड हिज ग्रुप has done a very great work with along with the government. इन्होंने गवर्नमेंट से मिल के साथ में मिलके काम किया यहाँ पर न्यूयॉर्क में, where he started with serving cooked meal to old age houses. जो यहाँ पे old age houses है वहां पर थोड़ा एक कम तवज्जो हो गया था लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और तो इन्होंने घर घर जाकर वो हर बार हर डेली जाकर वहां पे है कुक्ड मील प्रोवाइड किया। जो न्यूयॉर्क में दैट वाज द पीक टाइम जब 10,000 केसेस डेली आ रहे थे, दैट टाइम ही वेंट आउट। फिर उसके बाद जो है इन्होंने पीपी किट्स जो है बहुत सारे 4 से 5 हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किए, बिकॉज शॉर्टेज था उस चीज का। एंड दैट ही डिड विद अलॉन्ग विद द कांग्रेसमैन, जिससे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनके साथ में मिलकर वो एक काम किया, जिससे एक उन्हें भी लगा कि पीपल आर स्टैंडिंग विद देम इन दिस टफ टाइम। फिर उसके बाद इमरान भाई ने कई सारे जो है दूसरे स्टेट्स में भी वो की पीपी किट है, और कई सारे मतलब इनके जो ग्रुप है, so they did good fundraising, they helped that as well. Plus community में जो शायद हम सभी ने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि जिसमें लोगों को जनाजे के मसले थे और दूसरे कुछ मसले थे, so those things have also been done. तो ये इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहता था कि एक वक्त पे ये घर में बैठे थे अंदर, now what happened and then why he came out? Yeah, no, like I said, it was very scary. बहुत डर लग रहा था हर किसी को, हर कोई घर पे, हर कोई वही कहता फोन करके कि भाई बाहर मत निकलो, it's not really safe and all that. But I couldn't control myself, hearing all the stories. मेरे खास near and dear, there are a lot of deaths in my circle, like I said, and थोड़े लोग hospital में थे, तो I had to step out to help these families. Then I said कि भाई क्या करूं, right? If I go out, I need to protect myself, and I tried to obtain PPEs. कहीं नहीं है, it was really difficult. So what I did was like I took that my raincoat, पुराना एक raincoat था मेरे पास, तो मैं वो पहन लिया, and always whenever I go out, I said I will wear 2 to 3 layers of clothes and cover myself, and I had surgical mask, and then I used to have this working goggles. तो वो लगा के करके मैं बाहर निकलता था. It was really difficult, to protect and take care and all that. But then I said like नहीं, निकलना जरूरी है, कोई ना कोई तो मदद करना है. And then my team actually stepped up. मुझे देख के वो भी आपके जो दोस्त इंस्पायर होके वो पॉजिटिव हुए थे, उनकी फैमिली को ग्रोसरी या मिल्क के लिए वहां से आपने मेरे ख्याल से जो इनिशिएटिव। यस एग्जैक्टली, मैं बोला एटलीस्ट जाके थोड़ा खाना वाना बांट देंगे, थोड़ा मिल्क, एग्स, ग्रोसरीज देंगे, करेंगे. एंड देन दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली. फिर देन यू हियर अनदर केस, अनदर फैमिली, अनदर नेबरहुड में, कम्युनिटी में, बी इट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, वी नेवर डिफरेंशिएटेड, राइट? तो हम जाके मदद करना शुरू करें. फिर स्लोली मुझे देख के मेरे दोस्त लोग मेरे सर्कल में, जन माय वॉलंटियर्स स्टार्टेड जॉइनिंग, and that's how we actually started doing this food donation program, right? Now we have served more than 300 families so far in our Nassau County. So ये काम सब जो है गवर्नमेंट से मिलके करे हम, नासा काउंटी के गवर्नमेंट ऑफिशियल से करे हम. Then also Senator Kevin Thomas, he also helped us a lot. He's always very encouraging and stuff. तो ये करते वक्त, like I said, it was difficult to obtain PPEs. तो मैं realized कि when it is really difficult to obtain PPEs, imagine how these frontline heroes, our superheroes, are struggling with PPEs in the hospitals. So that thought struck me, and then I said like, no, let us raise some funds and try to donate PPEs to hospitals. So mashallah say the community came together, we did a lot of fundraisings and stuff, and then we have donated N95 masks, which was more than gold. Back in those days, like a month ago or 2 months ago. Yes, N95. So I reached out to the suppliers in my circle,
and हम stuff पूरा सारा सामान China से मंगवाए करे. Within like 5 to 6 days we got the deliveries and stuff, and we have donated PPEs like N95s, gowns, face shields, and so on to NASA University Medical Center, which is the one of the biggest hospitals here in Nassau County in New York. तो ऐसा जो है ये जो है ना सिलसिला शुरू हुआ डोनेशंस का. And then, everybody, not just our organization, not just Muslim community of New York, there are a lot of organizations that have stepped up to the need of the hour. एक को देख के दूसरे, inspire हुए, and then they, started coming out. But initial days, like Basit Bhai was explaining, it was really difficult. People were like emotionally down, डर सा था, and it was terrible to step out of the house. But we did it. Alhamdulillah, we have our good volunteer base. They also stepped out, and currently we are doing not just food, hot meals distribution to the sick and elderly or the needy families. We are also distributing. We are actually packing the groceries in a nice, box, pack of groceries box, and we are delivering door-to-door delivery कर रहे हैं हम लोग. So that is happening. Or we're also supporting, doing the lunch arrangements to the frontliners, police department, fire department, all these frontliners. We really thank them for all their support, all their work, all the contributions, efforts, and everything. This is like you are going into a war, right? When people are dying around you, and how dangerous it is, and then you're going out there helping people out there. I feel that we definitely waged a war against Corona. And especially पूरा वर्ल्ड का जो एक तवज्जो था वो न्यूयॉर्क पर था कि यार यहाँ इतने केसेस जो बढ़ रहे हैं, यहाँ सारी चीजें हो रही है, तो उसमें ये सब काम करना बहुत एक अच्छी बात है. इट्स अ गुड इंस्पिरेशन फॉर आई थिंक जो यंगस्टर्स देख रहे हैं या जो लोग काम में जुड़े हैं वो देख रहे हैं. तो इसमें दोनों चीजें, एक तो अपना आपका एक पैशन भी होना चाहिए, प्लस आप प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए. जैसे इमरान ने बताया शुरू में ही वाज नॉट ready to go out, but then he started, he prepared himself. He didn't just go out. तो जो volunteers है, मुझे पता है बहुत लोग काम कर रहे हैं. So please guys, please make sure कि आप at least gloves पहने रहो. I have seen so many videos जहाँ हम gloves वगैरह नहीं पहन रहे हैं. I know गर्मी बहुत है, वो चीजें संभलनी नहीं जाएगी, but कुछ तो हमें करना पड़ेगा. हैंड सैनिटाइजर जो मिलते हैं उतने इफेक्टिव नहीं होगी. तो मेरा वो ये बात थी कि ये दिस इज अ गुड लर्निंग फ्रॉम इमरान भाई कि these are the basic things that you need to take care. इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि what are the things that has been covered. तो इमरान भाई एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पहले आया था उसमें ये था कि आपका जो ये ओवरऑल काम रहा और मतलब हाउ डिड द गवर्नमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्डेड टू दैट, बीइंग आपने एक नाम भी यूज किया कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स फ्रॉम न्यूयॉर्क देयर? It was really, it's a good feeling that Muslim community have stepped up and try to do their bit. Government was very supportive, and like I said, all hands on deck was needed. Everybody, because the situation was so bad. You were seeing, you would see like more than 1,200 deaths in a day. That is a lot. Every day, the graph would go up. 1,000 से 1,200 लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं. तो डर का माहौल एक तो वो है ही है, but the more you go out, you feel like and then once you protect yourself, you feel confident कि कर सकते हैं. But overall, Muslim communities, if you look at Islamic Center of Long Island that I go to, they have stepped up. They have done lots of donations to the government, and the other organizations, Muslim organizations, they have stepped up. So overall, man, like I think. It was a great contribution from Muslim Society of New York. Each and every organization has done their bit for part of the contribution. But एक को देख के दूसरा जो है ना इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, और then बाहर निकल के करना काजना. That's how actually I think people have come out. शुरू में तो it was limited to few people. I would say few individuals, not even organizations. But slowly, and as the things progress, जैसा एक दूसरे को देख के करके, people have started coming out.
वो जैसे वो एक शेर है कि अकेला ही निकल पड़ा था, कारवां आता गया और काफिला बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया. You can say that, yeah, but again, like I said, I don't know. I mean, दूसरे कहीं और लोग भी थे, बहुत सारे कर रहे थे, काज रहे थे. I would thank each and every person, each and every individual who has contributed to this cause. चाहे किसी भी कैपेसिटी में, right? Going and delivering the food, या कुछ डोनेशन कर दिए, या helped in packaging, या finding out the actual needy. That was a big challenge too. True. How do you reach out to the needy people, right? That was a big challenge. So each and every volunteer that has contributed, I really want to thank every person that has contributed to this cause. True. I don't have those newspaper cuttings and the tweets that politicians has mentioned that. So it is a great achievement. It is a great learning for us कि आप अगर अकेले भी है ना, तो जो जैसे इमरान भाई बता रहे थे कि आई एम सॉरी, मैं सिर्फ कंक्लूड करना चाहता हूँ लोगों के लिए कि ये एक लर्निंग भी रहे. इट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन ओनली. तो आप जो भी, अगर आप अकेले भी हैं तो छोटा सा इनिशिएटिव सही लीजिए और वही कीजिए जो आप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है. हम कई बार कोई भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझते हैं, मतलब कि यार ये 1000 किड्स देना है, मैं कैसे दूंगा, ये तो मुझसे नहीं होगा. तो डोंट आप वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लें, छोटा सा स्मॉल वाला लें, एंड देन आप अपने तरीके से छोटा सा स्टार्ट करें with whatever money you have. If you don't have money, with whatever skills you have. If you don't have skills, with whatever friend circle you have. जो भी छोटा सा है, एकदम छोटा सा शुरू करें, एंड देन स्लोली स्लोली काम करें, लोग वो बढ़ते जाएगा. That exactly matters, right? I mean, छोटा से शुरू करे, जितना हो सके उतना करे. That's how I started. I said, few families, couple of families that are very close to me. I said कि उनको खाना बना के घर पे जो है ना डिलीवर करेंगे. At least somebody has to take care of them. Go ahead, sorry. So that's how it starts, right? Then लोग जुड़ते गए, जैसा लोग जुड़ते गए, काम बढ़ता गया, right? और नीड बढ़ती गई. तो that's how you start. Start with small, whatever you have, and then you can always do whatever you can. अब इसमें जो एक क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कुछ लोग बैक होम जो है, दे आर डूइंग डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक ये है कि what precautions you are taking as giving, while giving door to door food. तो आप डोर टू डोर तो नहीं था, मैं बोलूंगा यहाँ पर इट्स मोर ऑफ कि एक से दो बिग सेंटर्स हैं, ओल्ड एज होम्स, जहां वो जाकर देते थे. बट यू कैन एक्सप्लेन व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव बीन टेकिंग केयर. Well, I hear cases are going up in India. जैसा औरंगाबाद ले लो, हैदराबाद ले लो, गुजरात में, मुंबई में. I keep hearing these things. Cases are really rapidly growing. So first and foremost thing, before you help others, first protect yourself. Help yourself, right? Cover up. Like I said, you don't need to be all fashionable with all the hi-fi PPEs. If you have a raincoat, just wear it. Have a hat. Wear the hat. Use goggles and cover up with a mask if you have a mask. If not, cover up with multi-layer clothing and stuff. And first protect yourself. फिर जाके आगे निकल के आप जाके दूसरों को हेल्प कर सकते हैं. Even when you do the food distribution and stuff, try to wash your hands, and if you have gloves, wear them, right? If you can obtain gloves, that's fine. If not, just carry a soap with you, or soap water in a water bottle. Just have soap water in it. You won't find a soap on the road. So I used to do all these things when I did not have sanitizer. Sanitizer was out of the market. Just carry soap water in a water bottle. Maybe when you feel like you feel that you have touched something, just wash your hands there. That's how you have to protect yourself. और इसमें ये डोर टू डोर का ये जो क्वेश्चन आया है, वो इसलिए है कि हाँ, जो लोग हैं वो दे आर कलेक्टिंग द फूड डोर टू डोर and then going to the neighboring neighborhood and then distributing the food. तो उसमें एक कंसर्न ये था कि कहीं वो ज्यादा फैल ना जाए. तो उसमें एक बेसिक प्रिकॉशन जैसे आप बता रहे हो कि आप मतलब या तो ज्यादा इंटरेक्ट मत करो, just yes, definitely you have to maintain the distance. Basically ask them to put the food there, collect it, and don't go close near to the people, right? I mean, social distancing is a must. Before you do anything, you have to maintain that social distancing. That is the first and foremost thing that you need to focus on. उससे हटके, like I said, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट तो करना ही है, but then try to avoid touching, as much as possible. चीजों को जो है टच करना, ये है वो है. Then, like I said, either carry a sanitizer or carry soap water or something like that.
और जो एक बात जो मेरी इमरान भाई से बात हो रही थी, तो व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो आउट एंड देन कम बैक, तो वो पूरे कपड़े जो अपने थे वो वॉशिंग मशीन में डाल देते थे, धो लेते। या हम इंडिया में बोल सकते हैं कि एटलीस्ट उसको छत पे डाल दो, थोड़ा उसको खुला रख दो धूप में, या धोकर उसको हल्का सुखा लो। प्लस ही यूज्ड टू डेली टेक बाथ ट्वाइस और थ्राइस, जब भी वो घर आ रहे हैं फिर चेंज करके फिर जा रहे हैं, क्योंकि इनके घर में मतलब फैमिलीज हैं, सारी चीजें, तो ही डजंट वांट टू गेट देम अफेक्टेड आल्सो, बिकॉज इस्लाम में जो है आप खुद किसी और की बीमारी का जरिया ना बने, किसी और की मौत का जरिया ना बने, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। Absolutely. It's not just protecting yourself, you're actually protecting your family. When you go out, try to cover yourself. And then when you enter house, you have to be extra careful when you're coming back, entering into the house, right? So what I used to do is, I used to wear like दो तीन कपड़े पहनता था, my layers. Directly घर आने के बाद directly I would go into the garage. वहां पे मेरे कपड़े जो ना दो लेयर उतार के, then I would enter home, and then directly take shower, and don't touch anything when you enter into home. And we got to be really mindful about the elders living in your house, chote bacche, or our family. That is very important. When you go out, help everybody, that's fine, but when you're entering into home, you have to be extra careful there. जी जी। तो ये क्वेश्चन जो है इमरान हाशमी से ही आया था, यहाँ एक सैयद इमरान हाशमी है, तो आई थिंक इमरान आपको वो आंसर मिल गया है। If you're still not clear, you can comment again and then we can clarify from Imran bhai again. तो दूसरा ये क्वेश्चन था इमरान भाई जो आया था, वो ये है कि हाउ इज रमजान। तो बिफोर यू जस्ट गिव द ब्रीफ की रमजान यहाँ जो होते हैं वो घर से कम मस्जिद में होते हैं। यहाँ जो मतलब एक ही सफ में ही खड़े हो गए महमूद अयाल जो है, तो वो रमजान जो है यहाँ हर कोई जाकर मस्जिद में ही इफ्तार करता है, तो डेली मस्जिद में खाना इफ्तार सब कुछ होता है। तो नॉर्मली आप मगरिब से पहले से तो तरावी तक विद फैमिली लोग मस्जिद में होते हैं। सो वेदर यू आर रिच पर्सन, वेदर यू आर पुअर, डेली एनीबॉडी, तो हर मस्जिद में जो है एक अपना कम्युनिटी डिनर डेली होता है और लोग वहीं जाके करते हैं। अब नाउ इमरान भाई आप बताइए कि हाउ इज रमजान गोइंग ऑन देयर, लाइक मस्जिदें कैसी क्लोज हैं, तरावी का जो है कितना मिस हो रहा है, एंड देन आई थिंक यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द Westbury Islamic Center, जो one of the biggest centers है Long Island में, so you are part of their community as well. So how Right. is there? Yeah, no, so Ramadan has totally changed. This is a different Ramadan than what we used to enjoy, what we used to observe, right? तो यहाँ पे like Basit bhai was saying, हर कोई मस्जिद को जाके जो है ना अपना इफ्तारी करता है। So maximum, I would say 70 to 80% majority of the population, they go to masjids. They go there right after असर नमाज के बाद जाते हैं, फिर वहीं पे इफ्तार करते हैं, मगरिब, उसके बाद जो है इशा पढ़ के फिर तरावी पढ़ के करके फिर गैदरिंग होती है, तरावियों के बाद फिर जो है ना घर लौटते हैं। तो एक हर दिन एक त्योहार का माहौल सा होता है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, आई एम अ गाय हु ऑलवेज वांटेड टू बी इन पीपल, लोगों से मिलना जुलना। तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपन ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान। मस्जिद में हम लोग जो है इफ्तारी प्रोग्राम्स करते हैं, हर दिन इफ्तारी चलता है वहां पे, ये है। तो वी आर डेफिनेटली मिसिंग ऑल दोस। इट इज डेफिनेटली ए इमोशनल थिंग कि दिस रमजान इज नॉट एग्जैक्टली द सेम हाउ वी यूज्ड टू enjoy, how we used to observe fasting and also entire Ramadan month. So things have changed. मतलब मुश्किल लग रहा है, इफ्तारी प्रोग्राम्स नहीं हो रहे ज्यादातर, गरीबों को एक जगह इकट्ठा करना, नीडीज को ये करना वो करना। But however, alhamdulillah, all the masajids, most majority of the masajids are doing the drive-through program. What we are doing is we are actually packing the food in boxes and then distributing them. So I also go to ICLI, part of that volunteer group, and besides what we do, deliver food door to door. I also, उतना नहीं रहा because the need is a lot. तो मैं मस्जिद में थोड़ा टाइम कम ही spend कर रहा हूँ. This is another thing which I really don't like. लोगों से मिलना करना, missing all that. सारे friends, relatives, everybody would gather masjid mein, and we are really missing that. It is difficult, can't digest the fact that Ramadan is going on and I can't do all this. So it's a tough feeling. एक जो चीज जो हमारे पास भी देखी हमने, और न्यूयॉर्क में भी मेरी बात हुई थी दो लोगों से, तो मस्जिद के जो इमाम है, जो अपने यहाँ के उलमा हैं, और जो कम्युनिटीज भी है, मस्जिद के बोर्ड है,
So they are encouraging people to stay at home, not to मस्जिद में तो लॉक है literally, मतलब लॉक मतलब Yes. Masjids are locked. जैसे Just doing anything you do in the masjids is all outside. Distribution, food distribution programs and all. So masjids are, highly strict about this. They're not encouraging any gathering, not more than 3 to 4 people, even for the distribution. So I definitely, commend the efforts of the masajids. They've been doing a tremendous job, and they have actually shifted all the, Jummah khutbas lelo, or Taraweeh programs, or all this teaching programs. Everything is online. लॉट ऑफ वुमेन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां और जो औरतें थी वो भी आती है मस्जिद। यहाँ तो खैर हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ हर मस्जिद में अक्रॉस यूएस वुमेन कैन प्रे, they can be part of lot of activities, they are माशाल्लाह leading Sunday schools also। तो एक जो चीज मैं बताना चाह रहा था कि एक जो मैसेज इमरान भाई ये है कि यहाँ पर ऐसी मस्जिदें लॉक है, मतलब लॉक है, आगे का दरवाजा लॉक है, पीछे से जाके आप नमाज पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। और ये इस्लामिकली भी कई सारी चीजें बताई गई हैं। और नाउ बीइंग, जैसे मैंने बताया था, औरंगाबाद है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, ये सारे रेड काइंड ऑफ रेड स्पॉट्स है, अभी हॉट स्पॉट्स हैं। तो प्लीज 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 अवॉइड गोइंग देयर। आप वहां जाकर किसी और को या तो बीमार करोगे या तो खुद अपने घर में बीमारी लाओगे, और ये केसेस हमने औरंगाबाद में देखे हैं। तो अल्लाह जो है हम सबको, मतलब सभी को इससे दूर रखें, सभी को इससे जो है सेहत अता फरमाए। बट देन दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन फॉलोड हियर, जो सेम था, अब थोड़ा इस वीक से नहीं होकर डिक्रीज होना शुरू हुआ है। Yes, alhamdulillah. आई थिंक रमजान एवरीवन इज लाइक, जो यहाँ पर बहुत जरूरी है मस्जिद में जाना, क्योंकि इफ्तार नहीं होता है उसके बिना। ये एक बहुत ही बेसिक जरूरत है यहाँ पर, तो मस्जिद में जाकर इफ्तार करना। इंडिया में फिर भी इतना नहीं है, हम घर में ही करते हैं। तो प्लीज गाइस स्टे एट होम। दूसरा क्वेश्चन जो है शेख यासिर से है, जो औरंगाबाद से है, ये स्टूडेंट रह चुके हैं अभी। तो हाउ इज द सिचुएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन? आई थिंक इन जनरल आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स का कैसा माजरा रहा वहां पर, मतलब हाउ वाज देयर। तो वन ऑफ द इनिशिएटिव था जो इमरान में, सॉरी, जो ड्राइव थ्रू यहाँ पर इफ्तार होता है, वो स्टूडेंट के लिए ही ज्यादा रखा गया है। यूनिवर्सिटीज के पास जो मसाजिद है, वहां पे ये किया गया है कि ये पूरा पैक करके, उसको सैनिटाइज करके पैक बॉक्स रख दिए गए। अब आप अपनी पार्किंग में मस्जिद के आते हो, मस्जिद की खिड़की में से वो बाहर आता है, आप अपने कार में बैठे बैठे ले लेते हो ड्राइव थ्रू में और चले जाते हो। तो ये मेनली जो है, मेरे कई सारे दोस्त टेक्सास में है जो स्टूडेंट है अभी, और यहाँ पर भी कनेटिकट में है, मैसाचुसेट्स में है। तो ये मसाजिद जो है, स्पेशली ये स्टूडेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए, इनके लिए जो है ये खाने का इंतजाम किया है। अच्छा, ज्यादा उसमें बड़ा बॉक्स होता है। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई न्यू अबाउट स्टूडेंट कि ये उनके लिए हेल्प के लिए था। बट यू कैन ऐड ऑन इमरान भाई कि हाउ इज द सिचुएशन देयर फॉर स्टूडेंट्स? Yeah, situation is really bad for students. If you look at students को बेचारों को अपनी स्कूल की फीस भरना पड़ता है, कॉलेज फीस, और उसके लिए वो लोग जो है और जॉब्स करते हैं बेचारे। ऑल दिस ऑड जॉब्स आर क्लोज्ड, जॉब्स नहीं है अभी, सो दे आर रियली स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। और हर चीज के लिए तकलीफ हो रही है, राइट? एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट रमजान। तो alhamdulillah से masajids, like I said, are doing their bit. ये बंदों को they are taking care of them, जैसे boxes distribute हो रहे हैं, कर रहे हैं। And majority of the students they live in and around masajids वगैरह, तो at least they are covered there. But people who are far away from masjids, it's really difficult for them. So I think this is a very tough situation. All we can do is just pray that we are back to normal and everybody is happy. And because until unless we flatten the curve and back to normal, लोगों के jobs वापस नहीं आने वाले, और उनको खाना पीना हर चीज के लिए तकलीफ होंगी। So it's been more than 2 months. It is going on, and अभी cases कम हुए हैं. The curve has gone down in New York, but still you see 150 to 200 people dying every day is a lot. We really need to control ourselves. We try to flatten the curve as much as possible, stay home, be safe, and try to control it. So again, even if you want to go out, वहाँ पे jobs नहीं है students के लिए, so I think it is a very difficult situation for them.
तो इसमें स्टूडेंट का आपने अच्छा कवर किया, थैंक यू इमरान भाई फॉर कवरिंग द स्टूडेंट पार्ट। अब एक ये जो चीज थी कि जिस हिसाब से ये जो चीजें जो पूरा एक ओवरऑल चला है, स्टार्ट से लेकर जो एक इग्नोरेंस रहा है उसकी वजह से बढ़ा है, फिर उसके बाद जो बीच में कई सारे इंटरेक्शंस हुए, पीपी किट की कमी की वजह से कुछ चीजें इम्पैक्ट जैसे जर्सी में हुआ है, तो कई सारे जो वीडियोस और ऑडियोज चल रहे थे कि ये साजिश है और ये तो बीमारी है ही नहीं। और एक क्या क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो ये जो मिसकंसेप्शन या जो मिथ जो कुछ हद तक फैल रहे हैं, कुछ हद तक लोगों का कहना है कि निमोनिया था और वो मौत हो गई। न्यू जर्सी में कुछ केसेस हुए हैं, आज भी मुझे पता चला था। तो इस बारे में मतलब यू हैव सीन दीज वेरी फर्स्ट हैंड, आप हॉस्पिटल्स में गए हैं, अपनी कम्युनिटी में लोगों का जो है इंतकाल हुआ है, तो आपका इस बारे में क्या एक टेक है, मतलब व्हाट हैव यू सीन देयर? क्या ये मिथ है, बीमारी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है? No, it is. I mean, definitely, बीमारी तो है. Definitely. Again, there are a lot of theories going around. I wouldn't advocate anything. मतलब कौन सा सही है, गलत है. I don't want to get into that. But definitely, ये बीमारी तो है वहाँ पे, and it is a very severe thing. It is not an light thing. इसको light लेना नहीं है. क्योंकि मैं मेरे खास दोस्त हमारे डॉक्टर साहब जो बीमार हुए थे, फर्स्ट बीमार हुए थे मेरे सर्कल में, and when he came out and explained to me what has happened, क्या हुआ था हॉस्पिटल में, he told me that he has actually seen death. वो मौत को गले लगा के आए, and जैसा इंसान को गला दबा रहे हैं and he cannot breathe, सांस नहीं ले पा रहे, ऐसा 4 से 5 दिन तक सफर होना है. It's not joke, it's not a joke. नहीं है, it's not a joke. किसी को वैसे हो रहा है. एंड देन मेरा दूसरा दोस्त बहुत क्लोज बंदा है, ऑल्सो वॉलंटियर, मेरे वॉलंटियर ग्रुप का है बंदा, उसको भी सांस की तकलीफ हो रही थी, तो एम्बुलेंस बुलाए करे, हॉस्पिटल लेके गए करे, देन फाउंड आउट कि इसके दोनों लंग्स में निमोनिया हो गया था. दे ट्रीटेड हिम फॉर निमोनिया. अगेन ही इज नॉट दैट ओल्ड, सो ही कुड रिकवर. बट हर किसी को देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स ये बीमारी के. There is no certain definite symptoms कि भाई यही होगा, यही इलाज है, इसका वैक्सीन ये दवाई ये है और वैक्सीन दवाई नहीं. कुछ दवाई भी पर्टिकुलर दवाई भी नहीं है. किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को गले में दर्द हो रहा है, किसी को सर में दर्द, बीमारी होगी. एंड the sad part is if you have that virus, 4-5 दिन तक आपको सिम्टम्स भी नजर नहीं आएंगे. Exactly. Most dangerous thing. इसका 10 days, more than 10 days का भी टाइम है. तो बेसिकली you think Basi, this is a very important point. You think I'm with you and everything is normal. ये भी normal है, मैं भी normal, we can be casual. नहीं है. Why do we need to follow social distancing? Is पता नहीं सामने वाले को कोरोना है नहीं है, पता नहीं मुझे है नहीं है. 5 to 6 days you wouldn't know. All normal. इसीलिए the most important thing is social distancing, even with your family members. True. Gotta be careful with that. और आई थिंक ये मतलब स्पेशली जो मैं इस बात पे इसलिए फोर्स करना चाहता हूँ कि रमजान चल रहे हैं, सबको ऐसे लग रहा है कि ये क्या हो गया है, और ऑब्वियसली एक मस्जिद में जाना एक रूटीन है, सारी चीजें गैदरिंग्स एक रूटीन है, बट ये जब आप इस चीज को ऐसा लें कि आप घर में हैं, आपके पास ज्यादा टाइम है, यू कैन स्पेंड मोर टाइम रीडिंग कुरान, यू कैन स्पेंड मोर टाइम डूइंग इबादत. एतिकाफ में हम अकेले जाके बैठते हैं ना, तो सोशल आपको एतिकाफ ही करवा रही है बेसिकली, अगर वैसा देखें तो. राइट. हम क्या आप एक अलग जाके बैठ जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वही है. तो आई थिंक टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. आप जितना हो सके घर में बैठेंगे उतना कम फैलेगा. और ये चीज इमरान भाई से आ रही है जो वहां पर न्यूयॉर्क में ही हैज सीन दैट वेरी क्लोजली. उनके खुद के लोग, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो भी इम्पैक्ट हुए इससे. तो ये एक बड़ा थैंक यू इमरान भाई, दिस इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड द मैसेज to back home in India for all the communities, I think, not only Muslims, but I think... No, absolutely. Well, I also forgot to tell you this. We got to encourage our frontline heroes. We got to thank them. What we did was, like with all our volunteer base, we went to each and every home of all the doctors and nurses, and we actually thanked them by honking, car ke horns bajate hue, and we did thank them. We need to encourage them. We need to tell them. इंडिया में आप करोगे तो आपको कोई और थैंक करने आएगा. Exactly, yes, no, I understand that. इंडिया के हालात तो बिल्कुल ही अलग है. अगर हर तरीके से अपने थैंक होता है, आपको थैंक करना है, तो आप पैसे भी वेस्ट मत करो फ्लावर नीचे गिराकर. मैं तो ये भी बोलूंगा, those money can be spent on... I'm totally against that.
I'm totally against that. You cannot waste money like that. If you want to thank doctors, give them PPE kits, give them food, maybe call them, say send a thank you card, नहीं तो जो ना text message भेजो, or do something for them, for their family while they are taking care of people. उनके घर पे जो ना कुछ खाना भेज दो. Thank them in a way which can actually make them happy. कहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से, that is not necessary. That is not the need of the hour. Need of the hour is PPEs, and somebody has to take care of their families while they are really waging a war with corona. ये चीजें करना जरूरी है. और सबसे बेस्ट वे टू थैंक देम और टू सपोर्ट देम आई थिंक इज टू स्टे एट होम. इज नॉट एग्जैक्टली द मोमेंट. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट देयर रिक्वेस्ट इज. यस, 18 घंटे या 20 घंटे का काम रिड्यूस होगा 16 घंटे में, 14 आवर्स. द मोमेंट द नंबर्स डिक्रीज हो गए ऑटोमेटिकली वो उनका, एंड देन दे विल be more than happy, the more you stay home, less number of cases, less number of patients to deal with, so they can be back home enjoying with their families. इमरान भाई, एक जो शायद हमने ऑलरेडी कवर किया, एक जो क्वेश्चन आया था कि जो बैक होम वॉलंटियर्स हैं जो फूड किट्स बांट रहे हैं या फिर इन जनरल जाके हेल्प कर रहे हैं, तो देयर आर व्हाट आर द एवेन्यूज दैट वी शुड लुक फॉर. एक तो फूड का हो गया, एक मेडिसिन का हो गया. आप जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की फैमिलीज का भी देखो जाकर, उन्हें भी मतलब मेक श्योर कि obviously they are well to do families but they would need your help also. So just give your message. What is your message to the back home India में जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है volunteers का? Well, the message is loud and clear. Maintain social distancing and teach others to maintain social distancing. That is how you will be able to control this virus. There is no vaccine, there is no medicine that controls this, right? So this is the first thing. Second thing is, the best way you can work, you can help others is by coming together. Try to, if you have an organization, if you're supporting in an organization, try to work with other organizations, try to collaborate, coordinate, have WhatsApp groups. If you cannot reach to people who are very far, try to reach out to other organizations in that local area. Try to coordinate that way, and then, try to take care of people. I think this is the need of the hour. Everybody should come together. The best way we can help people is by coming together, not like close to each other, maintaining social distancing, of course. That's how you will be able to help. Again, teaching people is educating. A lot of people need that education. How can you avoid this? How can you flatten the curve by maintaining the social distancing, which is a very, very important aspect of this whole entire Corona episode. जो वो एक कॉन्टेक्स्ट अलग है कुरान की आयत का कि भाई and remind for indeed the reminder benefits the believers. So you have to keep reminding. So this is more about reminding them about the good deeds, reminding about the Islamic teachings. But मुझे ये लगता है कि ये भी एक reminder, इसी से हम एक सीख ले सकते हैं कि you should remind people because this will save their lives. And Islam teaches us that we should save lives. So if you keep reminding your family, keep reminding your groups, keep reminding them, तो वो इंशाल्लाह that will help us to flatten the curve. मैं एक बार कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग के हैं तो प्लीज कमेंट में ऐड करें. मीन टाइम एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इमरान भाई से है जो व्यूअर से आया. लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन. तो इमरान भाई एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका ओवरऑल जो है अभी तक न्यूयॉर्क के बारे में क्या मतलब व्हाट इज द रोड अहेड नाउ, व्हाट डू यू सी? आई नो दैट कल न्यूयॉर्क के मेयर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. सो व्हाट डू यू सी द रोड अहेड एज पर योर एनालिसिस देयर? Well, I think the road ahead is a very rocky road. Schools are locked down and they're suspended for the rest of the year, right? There are new things coming up, which is very scary. There are other things that are impacting young kids. The cases have gone up even in that section, right? I think from 15 to 85, there's something new, Kawasaki or something that has come up. So I think we really have to be careful, and this is not. And this is going to be normal. Maintaining social distancing, and lockdowns, quarantine. We really need to get used to these things. When you think a person is sick, just quarantine yourself, isolate yourself, and quarantine, so that you don't spread this. So going ahead, we need to follow this. We need to make it a habit. ये अपनी जिंदगी में जो है ना इसको ये कर ले, और everything will change. The social gatherings will change. आपके दावत हो गए, parties, everything has to change.
Your vacation plans have to change. If you're traveling, you got to be really careful. Then your social gatherings have to be you've got to be really careful with those. But then again, educating each other, very important. Keep yourself busy, updated with what's happening around you. Cases कितने हो रहे हैं, कितने deaths हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, and try to research what's happening out there, or if you can help in one way or the other, just be there, step up. एक क्वेश्चन आया कि जो लोग जो रिकवरी रेट रहा है या जो लोगों को इम्पैक्ट हुआ है, तो वो रिकवर होने के बाद उनका मतलब हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस, या कितने लोग आपके जान पहचान में रिकवर भी होकर आए हैं, या क्या चीजें हैं जो थोड़ी प्रिकॉशनरी इन जनरल मतलब लोगों ने लिया है और वो रिकवर हुए हैं? See, one thing that I have observed, जो रिकवर होके वापस आए हैं, जो मुझसे बात किए हैं, जो मैं उनसे इंटरेक्ट किया हूँ, one thing is they have changed. People have changed totally because they have seen death. मौत को देख के आए हैं. And I'm not saying एक बंदा बोला मुझे. People who have gone to the hospital, the cases which were severe, who went at not necessarily till ventilator, but जो hospitalized हुए थे, उनके लिए बहुत तकलीफ थी. So they really appreciate what we have right now. They really appreciate their second life. So we gotta appreciate what we have on hand. Alhamdulillah, we are very safe. We are very healthy. I can do something. If I can do, if I don't do anything now, when I become old, I don't think I'll be able to do it. Even though I want to do a lot, I won't have that energy. Who knows what's going to happen tomorrow. So today, what you have, be happy with it and try to help others, right? उससे हम दूसरों को कैसा जो है help कर सकते हैं. Always think that कि not necessarily big, organization बना लिए, हजारों में, लाखों में कर लिए. Even if you help one person in your entire life, definitely that adds a lot of value. That's what I believe in. I really don't care about numbers. कितने लोगों को मैं कर रहा हूँ, कितना मैं करना चाहता हूँ. I don't set those milestones. Things happen, and I never looked at that. I was surprised to see my picture with my raincoat and my hat, in local newspaper here. I did not. But again, these things that again started with like few families, 3 to 4 families that I started, helping with food, and it just spread. Things do spread, and inshallah, doors will open up. If you want to do more, definitely people will join you, and then there will be a lot of avenues that will open up. Many of our brothers just joined, तो मैं एक बताना चाहता था वो लोगों को कि जो एक कंक्लूड हम आधे घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं. सो इमरान भाई इज बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क, वो हैदराबाद से हैं इंडिया में, और माशाल्लाह अभी जो एक बड़ा जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन हुआ है फ्रॉम द कम्युनिटी साइड, जो कोरोना के जो केसेस थे, सो दे वेंट आउट एंड सर्व कुक्ड मील्स हो गया. बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं यहाँ पर, तो डेली जो है 3 टाइम्स मील वो लोग प्रोवाइड करते थे. देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड, और हिज टीम, एंटायर टीम डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी पीपी किट्स जो रीयूजेबल है डॉक्टर्स के लिए. प्लस ही हेल्प्ड इन अदर स्टेट्स आल्सो दैट आई एम अवेयर ऑफ. ही डिडंट से दैट, बट देन आई एम अवेयर ऑफ ही हेल्प्ड इन अदर स्टेट आल्सो. न्यू जर्सी में कुछ कम्युनिटीज हैं, सो वहां पर भी पीपी किट्स पहुंचाए हैं. कनेटिकट में भी प्लान था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके थे, नहीं हुआ. So Imran bhai has done a good job. Plus he has worked very closely with government. जो administration है, कई सारे कांग्रेसमैन हैं, 2 कांग्रेसमैन के साथ इमरान भाई ने कुछ काम किया है. So and then they were very happy to have a representation from the community. क्योंकि यहाँ जो Listen, I would like to cut you off here because it's not me. It is about the community. It is. I cannot do anything. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. It is about my team that have come together. It's always we. And I think we have. Alhamdulillah, my team, whatever I do, they just blindly believe in me, right? They have trust in me and they step up and they contribute, right? I mean, I might have a plan, idea, they fulfill it. So I'm really blessed to have this volunteer team that I have. माशाल्लाह, that's good. And then I think मेरा जो टेक अवे ये रहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, even if you're, जैसे इमरान भाई is involved with क्रिकेट जो लीग है, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. प्लस मस्जिद की कम्युनिटी है, वहां पर वो इन्वॉल्व है. ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस है, उसमें वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. A lot of things that against bullying हो गया, या फिर racism हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं where he and his other teams, and then he's involved there also. Interfaith work हो गया when it comes to opening the doors for others.
ओपन मॉस डेज हो गया, या फिर गोइंग एंड यू नो एक्सप्लेनिंग देम एंड बीइंग पार्ट ऑफ देयर टफ टाइम्स आल्सो, इन देयर टफ टाइम्स आल्सो। जैसे बीच में एक जो सरदार जी के पास में हुआ था, सिख को जो डेथ हुई थी, जिसको मर्डर हुआ था सिख का यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड में, सो इमरान भाई वेंट एंड यू नो मेट देम एज वेल, आई रिमेंबर दैट फोटो एज वेल। प्लस कई सारे, तो सो आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, सो दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर यू। तो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, and whenever this tough time comes, we have to use or utilize those groups or those social networks into this good work, bridging the gap between, I think, different communities हो गया, या Absolutely. different लोग हो गए, तो मिलाकर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर देन इमरान मैंने एक मैसेज दिया है वॉलंटियर्स के लिए खास, कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, पहले अपनी हेल्प करो। वो खुद घर में बैठे थे, बट देन ही बॉट यू नो पीपी किट, ही स्टार्टेड विद द रेनकोट, वो रेनकोट में निकले थे पहले, so that you know it can save him, or kind of could be a layer and then 2 or 3 layer of clothes he wore. तो वो वॉलंटियर्स के लिए भी ये जरूरी है कि प्लीज यू नो हैव अ लेस इंटरेक्शन, जितना कम हो सके, स्पेशली जो रेड जोन में है, औरंगाबाद है, आपका हैदराबाद है, बॉम्बे है, पुणे है, तो इनके लिए, बाकी सबके लिए भी मैसेज है कि जितना लेस इंटरेक्शन उतना अच्छा है। डॉक्टर को आपको थैंक्स करना है, तो स्टे एट होम, नंबर्स डिक्रीज करो, फ्लैट करो कर्व, दैट्स द बेस्ट वे टू थैंक देम। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट गो आउट एंड यू नो हॉन्ग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। इंडिया में फिर वो आप पुलिस वाले जो हम बहुत देखे हैं, तो अल्लाह आसान करे खैर। और स्पेशली आई वुड से जो wherever you are, please help laborers, please whatever you can do। ये बड़ा मतलब I don't know how to explain Absolutely. it, but then please explain, you know, help, go and help out, please. Forget about what, you know, who writes what on Facebook, who says what on Twitter, but then please go out and help them, or at least have a sympathy for them. They are going through the worst of the times। शायद ये किसी के ऊपर ऐसा टाइम ना आए। प्लीज हेल्प देम wherever you see them, या contribute whatever you have towards them, या at least share their stories and then let people know। If you know anybody in government, share with them, ask them to help them, question them, please do that, you know, for laborers। ये सारा एक जो कंक्लूजन था, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो दैट यू नो दिस इज हाउ ही हैज डन, यू नो हिज टीम हैज डन द वर्क, एंड ये एक टेक अवेज है हमारे लिए बैक होम लोगों के लिए। और एक जो मैसेज था स्पेशली जो मुस्लिम्स के हैं, तो यहाँ जो है मस्जिदों में पूरा कम्युनिटी इफ्तार होता है, और लोगों को मस्जिद में जाना जरूरी होता है एक हिसाब से रमजान में, बिकॉज यू हैव योर यू नो यू ब्रेक योर फास्ट विद द फैमिली। आपके मतलब लेडीज जेंट्स सब वो मस्जिद में ही होते हैं। यू ब्रेक द फास्ट, यू हैव डिनर देयर, देन यू प्रे लेट नाइट यू नो नमाज एंड देन कम बैक। तो आप वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, एवरीबडी कम्स देयर एंड देन डेली यू हैव दैट, एंड इट्स फ्रॉम द कम्युनिटी, इट्स काइंड ऑफ अ पॉटलक यू कैन से, और यू नो पीपल पिच इन। तो यहाँ पर वो बंद है अभी। इंडिया में मस्जिदों में इफ्तार इतना नहीं है ज्यादा, तो प्लीज स्टे एट होम। आप इतिकाफ घर में कर सकते हो। इतिकाफ का मतलब ही सोशल डिस्टेंसिंग है एक हिसाब से देखा जाए तो। Absolutely. Yes. आपको हटा रहे हो, अलूफ हो रहे हो, एंड देन यू आर सिटिंग इनसाइड। सो यूज दिस टाइम एंड देन डोंट गो आउट। मस्जिदों में सामने ताला है, पीछे से नमाज पढ़ने आना, ऐसा मत करो कहीं पर भी। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, आई कैन पास ऑन दिस मैसेज टू माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंशाअल्लाह ताला। प्लीज डोंट माइंड, दिस इज फॉर द यू नो गुड ऑफ एवरीबॉडी। एंड वन थिंग व्हिच इमरान भाई इंसिस्टेड, आई थिंक द टेक अवे ये है, educate and educate, keep reminding people। Absolutely. बोला गया है remind as reminder benefits the believers, so inshallah that will help us, as you know we will stand together and then fight against this thing। and then last point, जो myth आप लोग सुन रहे थे, जो सुन रहे थे कि ये बीमारी नहीं है, या ये बीमारी में कोई मतलब किसी को नहीं हो रही है, या एक कम्युनिटी फैला रही है, कम्युनिटी को हो रही है। एक जगह ये है कि कम्युनिटी फैला रही है, यहाँ पर है कि एक कम्युनिटी को मारा जा रहा है। कुछ वीडियोस ऑडियोज शेयर हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी को हुई है। इमरान भाई हैज सीन हिज ओन फ्रेंड्स जो इसमें इम्पैक्ट हुए थे, और ये अगर होता है तो प्लीज मेक श्योर कि यू टेक ऑल द प्रिकॉशंस फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दें कि ऐसा कुछ ये बीमारी है ही नहीं, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। It is there, it exists, and people are getting impacted, people are dying out of that, whether irrespective of any religion. It's not picking the religion and then getting infected.
तो ये समराइज मुझे करना था because lot of people they just join now, so I just wanted to summarize for them. If you have any questions, please let us know inshallah. If not now, you can add the comment और फिर हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस को बाद में कवर कर कर आपको बता सकते हैं. अब इसमें I think yeah, that's it. So Imran bhai, thank you so much for joining us, for giving us your time, and inshallah जैसे आप बता रहे थे, next time if possible we can we can invite the doctor along with you. तो आप बता सकते हैं, या जो रिकवर हुए हैं, जैसे आप जो डॉक्टर का बता रहे हैं वो रिकवर हुए हैं. So I think that will give a good message out. And one more thing, Imran bhai is now he has a conference tonight with AOC. वो आप बताएं तो अच्छा है, आपके जरिए ही बताएं तो बेहतर है. जो आज शाम में जो कॉन्फ्रेंस है, so he is very active now, mashallah, and people are recognizing his efforts. So I think mashallah say, work is being recognized, and the good thing is ये work promote हो रहा है. Why I say that is not because I am being promoted. Work जब promote होता है तो लोग को पता चलता है, तो ताकि दूसरे लोग भी contribute कर सके, दूसरे और ज्यादा लोगों को जो है ना, ज्यादा needy लोगों को जो है ना मदद मिल सके. So government has recognized that, and local newspaper में इसमें आए करे, and senator, like I said, Senator Kevin Thomas has been extremely helpful, our local senator. And आज शाम में there's a program on a webinar. I'll put that in the comment section. If you have some time, you can join. It is with Muslims for Progress. A Muslim group from New York is hosting this event with Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, powerful woman in the parliament. I think आप लोग सब जानते हैं AOC एक जो न्यूयॉर्क की कांग्रेस वुमन है, so she'll be part of that conference along with Imran bhai is representing the Muslim community of New York. So that's good, Imran bhai, all the best. Make sure that you kind of make use of this great प्लेटफॉर्म. और वो जो आप करने का एक क्वेश्चन था, जमील भाई है, उनका एक क्वेश्चन था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस इज बीइंग करंटली फॉलोड इन एनवाईसी अदर प्लेसेस टू बिल्ड अप इम्यूनिटी. लाइक इन एनवाईसी और अदर प्लेसेस में एक इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए क्या गाइडेंस फॉलो हो रही है ऑफ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम. Well, yes, there's a lot of advices coming out to build the immunity. Taking the supplements, and then taking the C vitamins and so on. Immunity build करने के लिए first and foremost, one of my other psychiatric doctor has told me that डर को निकालो अपने दिमाग से, डर को निकालो, इससे ऑटोमेटिक इम्यूनिटी थोड़ा बूस्ट होती है, राइट. लेकिन but then you have to work out. घर पे भी हो तो वर्कआउट करना ना छोड़े. It's like really difficult to be strict with diet and also workout, but workout करना ना छोड़े, उससे भी immunity boost होती है. And try to control what you're eating. Watch out on your diet. That's very important. Just focus on all these supplementals which has high in C vitamins and D vitamins and whatnot. You can find that information online, but try to take as much as possible to build your immunity. I think as such कोई official guidelines या official जो है statements नहीं है कि ये सारी चीजें करनी है. Officially यही बताया गया है जो ये बता रहे हैं इमरान भाई कि I think I have read few places कि do your workout at home, make sure कि you're not falling sick, क्योंकि ये जो time है जो US में जो especially नॉर्थ ईस्ट में जो time है वो एलर्जी वाला time बहुत ज्यादा है. Right. Pollen start हुआ है, Yes. मौसम चेंज हो रहा है. Right. हिसाब से भी कई सारी चीजें बताई गई थी कि बेसिक जो एलर्जी वाली चीजें हैं वो you need to differentiate between आप एक नॉर्मल एलर्जिक से बीमार है या आप कोविड से बीमार है. वो भी एक जो है यहाँ पे चला था. तो ये बेसिक चीजें और कुछ एक ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस बताई गई है कि you should do one thrice in a day टाइप, कि जिससे आपके मिलता रहे लंग्स आपके जो है थोड़ा ज्यादा काम करें. Right. तो वो एक था. लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ और क्वेश्चन है क्या नहीं है, then I'll be able to. वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है इमरान भाई, और एक इमरान है वो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी ज्वाइन किए हैं हम अभी, तो माशाल्लाह. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक इमरान भाई वी हैव कवर्ड. जज़ाकल्लाह खैर, आपने जो भी काम किया न्यूयॉर्क में लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी या एनी डिफरेंसेस, माशाल्लाह.
और मैंने देखा हूँ गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया है. कीप डूइंग द वर्क, कीप शेयरिंग द वर्क फॉर अस, दैट विल इंस्पायर अस. कीप, आई थिंक आगे भी हम ऐसे कन्वर्सेशन रखेंगे, बहुत सारी चीजें जो पता चलेंगी. तो इंशाल्लाह इरादा है कि नेक्स्ट वीक अगर हुआ तो हम एक डॉक्टर को भी लाएंगे जो रिकवर हुए हैं, या एटलीस्ट जिन्होंने सर्व किया है कोविड वाले पेशेंट्स को, उनसे हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस बारे में. तो अगर आपके और कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह प्लीज feel free to add in comments and we will get back to you. Jazakallah khair. Stay home, stay safe. रमजान का महीना है, इतिकाफ जितना ज्यादा करेंगे उतना सवाब भी मिलेगा, and then you will, I think, strongly fight against this corona. Anything, इमरान भाई, जजाकल्लाह खैर, anything आपको बोलना है आखिर में? No, in closing, that's what I will say. Everybody should work together, protect themselves first, and try to maintain social distancing, and not to forget, educate others what social distancing is all about. How do we control, flatten this curve? Very important. And most important thing, don't look at religion, caste, creed, and religion while you're helping others. Just go ahead and help a human being. That's all I will say. If a person is in need, don't look at what he is, where he comes from, and all that. No questions asked. Just help the needy people. That's all I will request from every one of you that are watching this program. So thank you so much for bearing me here for so long, and thank you, Basit Khan, for inviting me. Inshallah, we'll get in touch with you soon. And guys, I'll forward the link. AOC के साथ जो आज शाम में है, वो कितना टाइम होगा? Thank you so much for that. Yes, yeah. If you can, yeah, send that out, and people can at least attend the program. We're already out of time. एक घंटे के ऊपर 1 मिनट हो चुका है, so we don't want to extend the time. Thank you so much. Inshallah, we'll be back next week again with some more conversations. Thank you. All right. Thank you. Bye.